Hello, children, good morning, and a hearty welcome to your English class. I hope all of you are doing well. Now, before starting the class, I want to tell you something that I read somewhere and I found it really nice. So, I want to share it with you all. Sometimes life may get very hard, but hard does not mean impossible. Okay, so this is a thought that you all need to, in fact, not only you all of us need to apply in our lives, because sometimes things may get very hard, very difficult in our times. The storms may be very much destroying, but what we need to do is we need to have faith, because hard is not impossible. Things may get difficult, but it is not the end. Okay, so today we will start the chapter Adverbs, and as I told you in the previous class, we will firstly do all the parts of speech that are there in your syllabus, and after that we will move to the rest of chapters. So today we will do adverbs, then we will, in the next grammar class, we will do prepositions, and after that we will start from determiners. Okay, so let's get going to the video. Children, we have studied the different parts of speech, right? Parts of speech हमने कई सारे पढ़े. क्या होते हैं parts of speech? Parts of speech, speech मतलब बोलना. जो बोलते वक्त हम different जो भी चीज़ें हम बोलते हैं वो कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, किसी किसी कैटेगरी में कैटेगराइज्ड होते हैं. जैसे कुछ वर्ड्स वर्ब्स होते हैं, कुछ वर्ब्स एडजेक्टिव्स होते हैं, कुछ वर्ड्स नाउन्स होते हैं, कुछ वर्ड्स प्रोनाउंस होते हैं. So we have studied nouns, pronouns, adjectives and verbs. The next part of speech that we will study is adverb. Okay, so let's move on to the video and see what are adverbs. I hope you all understand this video, and if you find any problem in the video, then you all can put it down in the comment section. So let's get moving to the video. Look at the following examples, students. The first example is, her dress is very beautiful. Okay, her dress is very beautiful. Now let's classify all the words in this sentence according to their parts of speech. हर एक word को उसके part of speech से जानते हैं. सबसे पहला word हमारा है her. तो her क्या है? her हमारा pronoun है. ठीक है, pronouns are words that are used in place of nouns. So her यहाँ पे एक pronoun है. The next word is dress. Dress is a noun. Is a helping verb. जो word है is, वो एक helping verb है. हमने पढ़ा है ना main verbs and helping verbs. तो मेन वर्ब्स वो होते हैं जो किसी एक्शन को डिनोट करते हैं, और वो वर्ब्स जो किसी एक्शन को ना डिनोट करके मेन वर्ब्स की हेल्प करते हैं या सेंटेंस में मेन वर्ब्स की जगह को लेते हैं, उसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. तो इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है. और ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल हमने एडजेक्टिव्स पढ़ा है, तो हमें पता है ब्यूटिफुल किस चीज़ के बारे में बोला जा रहा है, ड्रेस के बारे में, है ना. सो ब्यूटिफुल वर्ड जो है एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है. ठीक है, तो ब्यूटिफुल एक एडजेक्टिव है. अब अगर हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ ब्यूटिफुल इज द ड्रेस, हाउ ब्यूटिफुल इज द ड्रेस, तो आंसर क्या आएगा? वेरी ब्यूटिफुल. तो वेरी जो है, जो वर्ड है ब्यूटिफुल, उस वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है, उस वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है. या हम कह सकते हैं कि द वर्ड वेरी एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्यूटिफुल, विच इज एन एडजेक्टिव. सो वेरी is an adverb. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. Mary sings sweetly. Now let's classify the words according to their parts of speech. The first word is marry. It is a noun. The next word is sings. It is a verb, main verb. And the last word is sweetly. Sweetly किस word को describe कर रहा है? Sings, which is a verb. So the word sweetly describes the word sings, and it is an adverb. If we ask the question, how does she sing? The answer is sweetly. So sweetly is an adverb. The next example is, the sun shines everywhere. ठीक है, तो इस सेंटेंस में हम लोग वर्ड्स को क्लासिफाई करते हैं. द फर्स्ट वर्ड इज द, तो द हमारा आर्टिकल है. नेक्स्ट वर्ड इज सन. सन इज अ नाउन.
The next word is shines. Shines हमारा verb है, main verb है. It shows the action of the sentence. And the last word is everywhere. Which word does the word everywhere describe? जो word है everywhere, वो कौन से word को describe कर रहा है? Shines. Shines जो कि verb है, ठीक है? The word everywhere tells us more about the word shines. कहाँ कहाँ shine करता है? Where does the sun shine? Everywhere. So it is describing the word shines. Everywhere describes the verb shines. So it is an adverb. अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं where does the sun shine, we get the answer everywhere. Okay. Now again we'll see some more examples and then we'll come to the definition of the adverb that we will derive from the examples only. Okay. So let's see the next pair of examples. The first example is he will come today. So which part of speech is the first word? It is he, which is a pronoun. The next word is will. Will एक helping verb है. The third word is come. Come हमारा main verb है which shows the action. And the word today. What is today? ठीक है, today कौन से word को describe कर रहा है? Come को, ठीक है. When will he come? Today. So which word is today describing? The word come. So today is an adverb. The next example is you are always late. So the first word is you, which is a pronoun. The next word is are, which is a verb. The last word is late, which is an adjective. It is describing about you. It is describing about the pronoun, right? So it is an adjective here. Okay. And the third word of the sentence is always. Always जो है किस word को describe कर रहा है? Which word is always describing? It is describing the word late. ठीक है? The word late is described by the word always. Late जो कि एक adjective है, उसके बारे में और ज़्यादा बता रहा है हमें कौन सा word? Always. Always late, हमेशा late. ठीक है. So late को कौन सा word describe कर रहा है? Always. ठीक है. तो always is an adverb. अगर हम question पूछते हैं how often are you late, तो हमारा आंसर क्या आएगा? Always late. तो कौन से word को always describe कर रहा है? Late. ठीक है. तो late यहाँ पे हमारा adjective है and adjective को describe करने वाला word कौन सा है? Always. So it is an adverb. Now the next sentence is when did he come. ठीक है. तो इसमें जो हमारा when हटा दीजिए, second word did. ये कौन से तरह का verb है? It is a helping verb. He is a pronoun and the word come is a verb. तो ये हमारा एक question sentence है in which did is a helping verb, he is a pronoun and come is the verb. Okay. So which word describes the verb here? जो verb है हमारा come, उस word को कौन सा word describe कर रहा है? When did he come? The word when is asking about the word come. Okay. So when is an adverb here. Now let's see the definition and the kinds of adverbs. So children, जैसा कि हमने examples में देखा, adverbs are words which add something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. Adverbs वो words होते हैं जो किसी verb की meaning में या किसी adjective की meaning में या किसी और adverb की meaning में कुछ ना कुछ add करते हैं, कुछ बताते हैं. ठीक है. जैसे verb का अपना एक meaning है, उसमें कुछ add करना, या फिर adjective का meaning है, उसमें add करना, या फिर कि कोई दूसरा adverb है उसकी मीनिंग में कुछ ऐड करना. ठीक है. तो adverbs का यही काम होता है. जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल्स देखे, आप लोग एग्जाम्पल्स चाहें तो फिर से देख सकते हैं. कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो कुछ adverbs ऐसे थे जो adjectives को डिस्क्राइब कर रहे थे, कुछ adverbs ऐसे थे जो verbs को डिस्क्राइब कर रहे थे. So the definition of adverb goes like an adverb is a word that adds something, जो किसी word की meaning में add करता है. कौन से words की meaning में add करता है? Either a verb or an adjective or another adverb. Okay. So there are 6 kinds of
adverbs. Okay, the first one is adverb of manner. इसमें हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं हाउ, ठीक है, कैसे, हाउ. ओके. एडवर्ब ऑफ प्लेस, जैसा कि आप लोग प्लेस से समझते हैं जगह, तो द क्वेश्चन दैट वी पुट टू गेट द एडवर्ब ऑफ प्लेस इज वेयर. द थर्ड वन इज एडवर्ब ऑफ टाइम. टाइम आप लोग समझ ही रहे हैं, समय, ठीक है. तो एडवर्ब ऑफ टाइम फाइंड आउट करने के लिए वी पुट द क्वेश्चन व्हेन. Then the fourth one is interrogative adverb. Interrogative means questioning adverbs. Okay, the adverbs which raise a question. तो question words ही होते हैं उसमें. What, where, how, who. Okay, ये सारे words. Then the next is adverb of degree. Degree means to what extent या कितना, how much. Okay, that is called degree. Okay, so we raise the question how much or to what extent for getting adverb of degree. The next is adverb of number, जिसे हम लोग adverb of frequency भी कहते हैं, ठीक है. adverb of number में हम लोग को exact number of times मिलता है, and adverb of frequency में हमें ये पता चलता है कि how often something is done, कितने टाइम के डिफरेंस पे कोई काम हो रहा है, ठीक है. तो for getting the adverb of number we raise the question how often. Now let us discuss each of these types of adverbs in detail. The first one is adverb of manner. Okay, so adverb of manner हमें क्या show करते हैं? They show how or in which manner an action is done. कोई काम कैसे हो रहा है, ठीक है. They show us this. और adverbs of manner answer the question how. अगर हमें किसी सेंटेंस में adverb of manner find out करना हो, so we have to question how, and the answer that we get will be the adverb of manner. Okay, and another thing about adverb of manner is it is usually placed either after the main verb or after the object. main verb मतलब जो काम हो रहा है सेंटेंस में, ठीक है, उस वर्ड के बाद, जो मेन वर्ब है हमारा, उसके बाद या तो एडवर्ब ऑफ मैनर प्लेस होता है या तो आफ्टर द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमने वर्ब्स में पढ़ा था, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स, याद है. वैसे ही ट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती थी, रिमेंबर स्टूडेंट्स. सो हमारे एडवर्ब्स ऑफ मैनर सेंटेंस में कहाँ पाए जाते हैं, या तो इमीडिएटली आफ्टर द मेन वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. ओके, now let us see some examples through which it will be clear. The first example is he swims well. Okay, this sentence, the word he is a pronoun, swims is the main verb, and swims के बाद कौन सा word है, well. Okay, well is the adverb of the sentence. We question how does he swim. He swims well. आंसर क्या आया, well. तो well जो है हमारा adverb of manner है, and here well is used right after the main verb. main verb क्या है, जो action word है सेंटेंस का, क्या है, swim, swims, ठीक है. तो swims के immediately बाद कौन सा word आया है, well, and it also answers the question how does he swim well, ठीक है. तो well is the adverb of manner. Okay, the next sentence is he ran quickly. So here also ran is the main verb of the sentence. It shows the action of the sentence, and the word quickly shows how he ran. ठीक है, वो कैसे दौड़ा, वो quickly दौड़ा, ठीक है. So quickly is the adverb of manner. The next sentence is she spoke softly. ठीक है, spoke मतलब बोलना, बोलना is the main verb of the sentence. Spoke is the main verb of the sentence here, and the word softly, it describes how she spoke. वो कैसे बोली, वो softly बोली, ठीक है. So softly is the adverb of manner, and it is placed right after the main verb of the sentence, that is spoke. The next sentence is he plays the flute beautifully. ठीक है, अब इसमें main verb क्या है, इस सेंटेंस में हमारा मेन वर्ब क्या है, इट इज प्लेज, ठीक है. व्हाट डज ही प्ले, हम ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते थे, याद कीजिए स्टूडेंट्स, हम लोग को जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना होता था, सो वी रेज्ड द क्वेश्चन व्हाट एंड whom ऑन द वर्ब, ठीक है. व्हाट डज ही प्ले, वी गेट द आंसर द फ्लूट. तो फ्लूट हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है.
and here the word beautifully is the adverb. ठीक है, how does he play? He plays beautifully. ठीक है, तो beautifully हमारा adverb हुआ और adverb कहाँ पे है? Flute के बाद. Flute is the object of the sentence. Okay, so here the adverb beautifully is placed after the object, that is flute. ठीक है, अगर आप लोग को ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स ना याद हो, ऑब्जेक्ट ना याद हो, तो एक बार वर्ब्स की वीडियो देख लीजिएगा, याद आ जाएगा. ठीक है, ही प्लेज द फ्लूट ब्यूटिफुली. ठीक है, हाउ डज ही प्ले? ब्यूटिफुली. ठीक, तो ब्यूटिफुली जो है इज द एडवर्ब ऑफ मैनर हियर. ओके, द लास्ट सेंटेंस इज ही एट द चॉकलेट केक ग्रीडीली. यहाँ पे भी हम लोग क्वेश्चन रेज करते हैं, व्हाट डिड ही ईट ग्रीडीली? He ate the chocolate cake. तो chocolate cake यहाँ हमारा object है. Okay, and how did he eat it? Greedily. He ate it greedily. तो ate को कौन सा word describe कर रहा है? Greedily. So greedily is the adverb of manner here, and it is placed after the object of the sentence. Object of the sentence क्या था? Chocolate cake. अब chocolate cake के बाद आया greedily. It is the adverb of manner. The next kind of adverb, students, is adverb of place. Now, as the name suggests, adverb of place tells us where something happens. कोई action कहाँ पे हुआ है? And adverb of place answers the question where. Place means where. Okay? And adverbs of place are placed mainly after the ऑब्जेक्ट और द मेन वर्ब इन द सेंटेंस. या तो ऑब्जेक्ट के बाद या तो मेन वर्ब के बाद, वैसा ही जैसा एडवर्ब्स ऑफ मैनर में था. ओके, लेट अस सी द एग्जांपल्स. क्लोज द डोर व्हेन यू गो आउट. हियर सी, वेयर विल यू गो आउट मतलब कहाँ जाना है? बाहर जाना है. वेयर मीन्स कहाँ, कहाँ जाना है? बाहर जाना है. सो आउट इज द adverb of place, and it has come after the main verb of the sentence go. Okay, the next example is the cat is hiding underneath the couch. Where is the cat hiding? Underneath. Underneath मतलब couch के नीचे, below it. Okay, so where is the cat hiding? Underneath. And what is the main verb in this sentence? Hiding. Okay, so underneath is the adverb of place which is there after the main verb, that is hiding. Hiding main verb है, hiding के बाद आया है underneath which is the adverb of place. The next example is, will you plant these saplings outside? Where will you plant these saplings? ठीक है, कहाँ plant करना है? saplings मतलब छोटे पौधे. Okay, तो where will you plant these saplings? Outside. Which word is telling about the place? Outside. And here if we put the question, what will you plant? आंसर क्या है? सैपलिंग्स. तो सैपलिंग्स क्या है? सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट के बाद आया है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस विच इज आउटसाइड. स्टूडेंट्स, एडवर्ब ऑफ टाइम. सो व्हाट डू एडवर्ब्स ऑफ टाइम डू? एडवर्ब्स ऑफ टाइम शो अस व्हेन एन एक्शन इज डन. ठीक है, कोई एक्शन कब हो रहा है, that is shown by the adverb of time. और adverb of time find out करने के लिए हम लोग कौन सा question raise करते हैं? when. time की बात है. ठीक है, तो कब, जब हम मान लीजिए टाइम की बात करते हैं, कल, परसों, तरसों. ठीक है, that way. so what question do we raise? कब. तो हमारा आंसर आता है कल या परसों या मंडे को या ट्यूसडे को, like that. okay, so we raise the question when. okay, so adverbs of time answer the question when, and they are usually placed at the end of the sentence. adverbs of time जो हैं वो usually अक्सर sentence के last में आते हैं. ठीक है, तो किसी भी sentence में जब कोई ऐसा word होगा जो time show करेगा तो वो होगा हमारा adverb of time. ठीक है, it should be an adverb and it should show time. okay, it should give the answer of when. okay, I saw Sam today. When did I see Sam? Today. तो यहाँ पे कौन सा वर्ड डिस्क्राइब हो रहा है? see. ठीक है, देखने का काम हो रहा है, एंड देखने का काम कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? today. कब देखा? आज देखा. today. okay, so today is the adverb of time. The next is I will call you later. When will I call you? Later.
Okay, so later is the adverb of time. The school will open tomorrow. When will the school open? Tomorrow. So the adverb of time is tomorrow. The next sentence is she wrote to me yesterday. When did she write to me? Yesterday. We are getting the answer yesterday. So yesterday is the adverb of time. The next is he left early. When did he leave? Early. Okay, so early is the adverb of time. Okay, so adverbs which answer the question when are the adverbs of time, and they are usually placed at the end of the sentence के लास्ट में आते हैं most of the time, and वो टाइम बताते हैं कि कोई भी काम कब हुआ है. ठीक है, it describes the verb that when is the verb has happened, when the action has happened. Okay, so that was about adverb of time. The next is, students, adverb of number या adverb of frequency. So what is adverb of number, जिसे हम लोग adverb of frequency भी बोलते हैं? What is it? Adverbs of number or adverbs of frequency, they show us how often something happens either in a definite or indefinite terms. Means या तो डेफिनेट टर्म्स में या तो इनडेफिनेट टर्म्स में. मतलब कोई चीज कितने रेगुलरली हो रही है, हाउ ऑफन अ वर्क इज हैपनिंग. ओके, डेफिनेट मीन्स जब हमें पता हो कि कितना ऑफन हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल ऑलवेज मीन्स हमेशा, हमें पता है, इट इज डेफिनेट टाइम. ट्वाइस मीन्स दो बार, हमें पता है डेफिनेटली कि दो बार की बात हो रही है. थ्राइस मीन्स तीन बार, हमें पता है डेफिनेटली. ठीक है, एंड देन इनडेफिनेट टर्म्स मीन्स जैसे रेयरली. रेयरली मतलब होता है कभी कभी. ठीक है, सो रेयरली हमें नहीं पता, कभी कभी में कभी भी आ सकता है, हो सकता है एक साल में हो सकता है 10 साल में हो. ठीक है, तो हमें टाइम एग्जैक्टली नहीं पता है, इट इज नॉट डेफिनेट. देन ऑफन, ऑफन मीन्स अक्सर. ठीक है, अक्सर भी हमें नहीं पता है कि डेली मतलब जो भी काम हो रहा है वो डेली हो रहा है या 2 दिन पे हो रहा है या वीकली हो रहा है. ठीक है, तो ऑफन ऑल्सो डज नॉट डिस्क्राइब अ डेफिनेट टाइम पीरियड. एंड सेल्डम, सेल्डम ऑल्सो मीन्स कभी कभी. ठीक है, तो इट इज सेम एज रेयरली. ओके, तो यहाँ भी हमें सेल्डम में भी नहीं पता है कि एग्जैक्ट कब कब काम हो रहा है. ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ नंबर या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या बताते हैं हमें? दैट हाउ ऑफन अ वर्क इज डन, कोई काम कितने रेगुलर टाइम पे या कितने टाइम पे हो रहा है. ठीक है, और एडवर्ब ऑफ नंबर या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन से क्वेश्चन का आंसर करता है? हाउ ऑफन. व्हेन वी आस्क द क्वेश्चन हाउ ऑफन, the answer that we get is the adverb of number or adverb of frequency. For example, the first sentence, twice the boy hit him. Okay, twice the boy hit him. How many times did the boy hit him? How often did the boy hit him? Okay, so we get the answer twice. ठीक है, confirm है, हमें पता है, it is definite time period. Okay, so twice. The next is he is often late for work. ठीक है, वो अक्सर काम के लिए लेट होता है. ठीक है, so here also it describes definite time period. ठीक है, it describes the definite number of times. How often is he late for work? He is often late for work. Okay, so often is the adverb of number. The next example is I visited him once. How often do you visit him? I visited him once. मतलब तुम कितनी बार उनसे मिले हो? I have visited him once. I visited him once. मैं एक बार उनसे मिला हूँ. ठीक है, तो that एक बार is once here in the sentence. Okay, so once is the adverb of number or the adverb of frequency. The next is we take a vacation at least once annually. We take a vacation at least once annually. Okay, so यहाँ पे once is also an adverb and annually is also an adverb. Okay, and both are adverbs of number or frequency. Okay students, अब जब हमने एडवर्ब की डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर आप लोग को याद होगा तो हमने पढ़ा था कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. ठीक है, तो यहाँ पे द वर्ड एनुअली इज एडिंग समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड once, which is already an adverb. So here we can see that annually is an adverb which adds something to the meaning of the adverb
once. Okay, so once and annually both are adverbs, and both are adverbs of number or adverbs of frequency. The next example is we seldom visit John. In this, seldom means kabhi kabhi. So here seldom is an adverb of number or frequency. The next kind of adverb is adverb of degree. Okay, adverb of degree shows how much or to what extent a thing is done. कोई काम कितना हो रहा है, how much. Okay, they answer the question how much, and adverbs of degree are usually placed before the adjective or adverb that they are modifying, or before the main verb. Adverbs of degree जिस एडजेक्टिव के लिए बोला जा रहा है या तो उस एडजेक्टिव के पहले, या तो जिस एडवर्ब के लिए बोला जा रहा है उस एडवर्ब के पहले, ठीक है, या तो जो मेन वर्ब होता है उसके पहले लगाते हैं, ठीक है. तो दिस वाज अबाउट एडवर्ब ऑफ डिग्री. लेट अस सी सम एग्जांपल्स. द वाटर वाज एक्सट्रीमली कोल्ड. ओके, द वाटर वाज एक्सट्रीमली कोल्ड. एक्सट्रीमली describes the word cold. Okay, cold is an adjective. cold water के बारे में बता रहा है. water एक noun है. noun के बारे में कौन सा word बता रहा है? cold. it becomes an adjective, and adjective को कौन सा word describe कर रहा है? extremely means बहुत ज़्यादा, ठीक है. so it is an adverb. when we ask the question how much cold was the water? extremely cold. we get the answer extremely. so it is adverb of degree, ठीक है. the next example is she has almost finished. ठीक है, the main verb is finished, and which word describes the word finished? almost. how much has she finished? almost finished. Okay, so almost is the adverb of degree. The next example is he is quite strong. strong is the adjective, and which word describes the word strong? how much strong? quite strong means काफी strong. so quite is the adverb of degree. The next is her dress is very beautiful. how much beautiful? very beautiful. Okay, so very is the adverb of degree. it describes the adjective beautiful. Last example is she was partly pleased. वो थोड़ा सा pleased थी. pleased means खुश. Okay, she was partly pleased. how much pleased? partly pleased means थोड़ा सा, कुछ parts में, ठीक है, to some extent you can say. Okay, so partly means to some extent. so how much was she pleased? partly pleased. pleased described by the word partly. how much pleased? partly pleased. so partly is the adverb of degree. Okay students, now the last kind of adverb that we will study is interrogative adverb. तो interrogate करना मतलब question करना. Okay, so adverbs that are used to ask questions are called interrogative adverbs. as simple as that. Okay, जो adverbs questions पूछने के लिए use किए जाते हैं interrogative adverbs होते हैं, ठीक है. So what are interrogative adverbs? Adverbs that are used to ask questions are called interrogative adverbs, and they are usually placed at the beginning of the question. जो sentence की beginning होती है, जो question की beginning होती है, वही होते हैं interrogative adverbs. Okay, when did he come? so the word when is asking the question about the verb come. come हमारा verb है, and when is asking the question about come. so when is the interrogative adverb. the next is where is your sister. यहाँ पे is the helping verb, and हम हमारे sister के बारे में question कर रहे हैं. where is your sister? so is the verb, and where is asking about the helping verb. Okay, so it is the interrogative adverb. the next is why is the garden such a mess. mess मतलब गंदा. Okay, so garden इतना गंदा क्यों है? why is asking about the garden being a mess. Okay, about the garden being untidy, about the garden being unclean. so why is the adverb of interrogation. yeah, interrogative adverb here. the next is how are you today. Okay, so how is the interrogative adverb, and the last example is where did he go. so where is the interrogative adverb here in the sentence. Okay, so I hope you all have understood all the kinds of adverbs properly. Now children, I'll be sending the PDF of the exercises and the copy work. Okay, so along with the copy work, where I have written the exercises, I have also mentioned that which exercises you have to do in copy.
in brackets after the exercise number it is written in copy in book, that way. Okay, तो जिन एक्सरसाइजेस के बगल में इन कॉपी लिखा हुआ है उन एक्सरसाइजेस को आप कॉपी में करेंगे और क्वेश्चंस भी लिखेंगे. ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ आंसर्स लिख के दिया है तो आप लोग भी सिर्फ आंसर्स लिखेंगे. राइट द क्वेश्चंस आल्सो. ओके स्टूडेंट्स, so if you have any problem, comment it in the comment section. Okay, problem regarding the understanding of the chapter. Okay, so have a good day students, take care of yourselves.